बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we learn how to create second navigation menu in an Oracle Apex 21.2 InshaAllah, and this is thought number 2. After creating a workspace and after creating an application, this is thought number 2. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से दूसरा नेविगेशन मेन्यू बनाया जाता है Oracle Apex में, और ये दूसरी सोच आती है मेरे जहन में एप्लीकेशन बनाने के बाद। Now click on App Builder after signing to the created workspace, newly created workspace। App Builder पे क्लिक करेंगे। वर्कस्पेस बनाने के बाद Now come to application Apex 21.2। application Apex 21.2 पे आएंगे। Now click on shared components। shared components पे क्लिक करेंगे। explore navigation menu। अंडर नेविगेशन के मेन्यू में जाएंगे। अंडर नेविगेशन के click on navigation menu पे क्लिक करेंगे। Now hit create entry बटन। create entry का बटन दबाएंगे। Now we do not select anything from parentless entry drop down। हम parentless entry drop down से कुछ नहीं मुंतखब करेंगे। Now we will change sequence को हम चेंज करेंगे। Now define image। /class while hitting this button। अब इमेज और क्लास बताएंगे इस बटन को दबा के। Now specify less entry level। अब लेस एंट्री लेवल बताएंगे। Now select page in this application from target type drop down। पेज इन दिस एप्लीकेशन टारगेट टाइप ड्रॉप डाउन में से मुंतखब करेंगे, क्योंकि पहले से हुआ हुआ है। इट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। नाउ डिफाइन पेज नंबर विच विल बी 1। पेज नंबर बता देंगे जो कि 1 होगा। नाउ हिट क्रिएट एंट्री बटन। अब क्रिएट एंट्री का बटन दबाएंगे। create less entry button। Now the second navigation menu is also available। second navigation menu भी मौजूद हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।